So whenever we discusses about the equilibrium thing, the only thing that we need to understand is what is the meaning of equilibrium. Dynamic equilibrium is the term that we refer mostly, and we are familiar with reversible and irreversible reactions. Reversible reactions from which we can have the reactants back, and irreversible reactions वो होते हैं in which we cannot get back the uh, रिएक्टेंट्स हम वापस नहीं ले सकते हैं उसके अंदर हमारे पास, ठीक है। वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म वी कैन नॉट गेट बैक द रिएक्टेंट्स अगेन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बहुत फेमस एग्जांपल वाटर के केस में आ जाती है, ठीक है। दैट वाटर में जब हम लोग शुगर को मिक्स करते हैं, हम वाटर को इवेपोरेट करके वी कैन गेट बैक द शुगर अगेन, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की टर्म यूज ये होती है व्हेन there is a term uses not the term, there are two things occurring in a reaction. One is forward reaction, which means the is being formed, and reverse reaction, yeah, backward reaction, in which the reactants are getting back. So जो dynamic equilibrium होता है, it is the point when the forward reaction and reverse reaction are in equilibrium with each other, which means the number of product formed is equal to the number of reactants getting back again, ठीक है। So dynamic equilibrium के अंदर normally क्या होता है हमारे पास, the movement के जिस मतलब the product forming and the reactant formings are at the same, मतलब product form or and the reactants are breaking down into reactants again. That point is known as dynamic equilibrium. When that dynamic equilibrium is achieved, we can हमारा main target तो reactant product होता है ना। So by changing the chemical equilibrium, either by changing the temperature, either by changing the pressure, or by changing the concentration of the reactants, और कैटलिस्ट के थ्रू हम लोग जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव मोर एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो देयर आर फोर पैरामीटर्स on which we can disturb the equilibrium of the reaction, and that is by changing the temperature, by changing the pressure, by changing the concentration, or by changing the by adding catalyst to it. Okay, now let's see, इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी किए हुए हैं। The products react together to form in such a reaction, the product reacts together to form the reactants again. At the same time, reactants form product. These reactions are called reversible reaction, in which the product is breaking to give the reactants, and reactants are combining together to form the product. Such types of reactions are known as reversible reaction. And the point at which this is occurring, this is achieved when the dynamic equilibrium is achieved, और उसको डबल एरोस के साथ शो करते हैं हमारे पास। नॉर्मली वेपर के अगेंस्ट कर होता है कि जितने वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, अगर हम वाटर को बॉईल करें, जितना वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर्स कन्वर्ट बैक्स टू लिक्विड। ये एग्जांपल है उसके अंदर। सच अ पॉइंट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ रिएक्शन in which the product can react with each other to form the original reactants again is called a reversible reaction. A double arrow in a chemical reaction indicates that the reaction is reversible. डायनामिक इक्विलिब्रियम से यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ, बट ये लिखा हुआ है। The state of the chemical reaction where the forward reaction and reverse reaction occurs at the same time is known as dynamic equilibrium. इसके अंदर उसने दो एग्जांपल्स डिस्कस की हुई है, एक वाटर वेपर के केस में डिस्कस किया हुआ है, एंड द वन विच वो। अब इसके अंदर देखो हमारे पास many chemical reactions do not end. In such reactions, a conversion of reactant into product and conversion of product into reactants can occur simultaneously. Such reactions are known as reversible reaction, and this point is known as dynamic equilibrium or chemical equilibrium. A chemical reaction proceed in both forward and reverse direction. Forward में क्या होता है, products बन रहे होते हैं, reverse में क्या होता है, reactants बन रहे होते हैं under the same condition.
These reactions never end. All reversible reaction, physical and chemical, occur simultaneously in both directions, और उनको हम double arrows से show करते हैं. For example, sulfur dioxide combines with oxygen to give sulfur trioxide, and give vanadium as the catalyst, and this is the temperature and pressure conditions. ठीक है? For example, दिस इज एक्टिंग एट द सेम टाइम कि जिस टाइम पे प्रोडक्ट बन रहा है उसी टाइम पे प्रोडक्ट इज ब्रेकिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट्स. अमोनिया के केस में कैटलिस्ट आयरन है, 400 एंड 400 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो जिस मोमेंट में अमोनिया फॉर्म हो रहा है उसी मोमेंट पे अमोनिया ब्रेक डाउन होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है. सच रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी इज द कैटलिस्ट है. ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी देंगे, नाइट्रोजन बन जाएगा स्पार्क से बैकवर्ड्स. तो इस तरीके से, सॉरी आई सेड द स्टूपिड थिंग, डोंट कंसिडर दैट. सो यहाँ पे उसने उसकी थ्योरी डिस्कस की भी है. As the reaction process progress, the concentration of reaction gradually decreases and the speed of the forward reaction decreases accordingly. अब ये उसने किस में किया है? अच्छा, टेम्परेचर के ऊपर हमने इस चीज का ध्यान रखना होता है कि whether the reaction is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल होता है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होता है. डू यू गेट दिस पॉइंट? Yeah. कि when we know it's an exothermic reaction, so by increasing the temperature that favors a reverse reaction, and if it's an endothermic reaction, so by increasing the temperature it would favor a forward reaction and vice versa. ठीक है? So यहाँ पे लिखा हुआ है SO2 and O2 molecules react to form SO3. SO3 molecules breaks to give SO2 and O2. So इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है? एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये पोजीशन है. ठीक है? नॉट इक्विलिब्रियम SO2 एंड O2 है, एंड SO3 नॉट इक्विलिब्रियम है. द ओनली थिंग दैट इज इन इक्विलिब्रियम इज SO3 एंड बैक टू SO2 एंड O2. ठीक है? एक्चुअल रिएक्शन क्या था? सल्फर एंड ऑक्सीजन वाज कंबाइनिंग, सल्फर डाइऑक्साइड वो. तो इक्विलिब्रियम में कौन से हैं? दिस सेक्शन इज एन इक्विलिब्रियम. नॉट इन इक्विलिब्रियम में हमारे पास कौन सा आ रहा है? SO2 प्लस O2, एंड SO3 इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ठीक है? और उससे थ्योरी में भी ये लिखा हुआ. अब उसने एक्सप्लेन कैसे किया है? In the beginning, there is no SO3, so the rate of reverse reaction is zero. ठीक है? क्योंकि SO3 होगा तो SO2 and O2 आएगा ना हमारे पास. तो बिगिनिंग में S वो क्या? With the time, due to high concentration of the reactant, the speed of the forward reaction is highest. As the reaction progresses, the concentration of reactant gradually decreases and the speed of forward reaction decreases accordingly. As the concentration of SO3 increases, a small amount of SO3 slowly decomposes into SO2 and O2. This means now the reverse reaction has started. A point would come when the formation of SO3 and the formation of SO2 and O2 is in equilibrium with each other, which means forward and backward reaction is in equilibrium with each other. That is known as dynamic equilibrium. आगे उसने लिखा भी है, chemical equilibrium is also known as dynamic equilibrium. Because the end reaction never stops. This is because reactions do not stop when they reach equilibrium. Individual molecules are constantly reacting. However, the actual quantities of reactant and products do not change. This means it appears like कि कुछ भी नहीं हो रहा, but actually at the same time both is occurring. इस वजह से we cannot वो distinguish between के forward reaction हो रहा है या reverse, cause वो equilibrium में ही हो रहा है हमारे पास. अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हमने अगर उसको चेंज करना है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एंड द प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. बट व्हाट वुड हैपन अगर हम इनमें से किसी भी चीज को डिस्टर्ब करेंगे? ठीक है? दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. देन अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. The temperature would remain constant, the pressure and the volume would remain constant. But what would happen if we change any of it? Okay? अब पहला उसने क्या डिस्कस किया है कि what would happen अगर हम इफेक्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसके अंदर. एक ही उसने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है. मटीरियल्स रिक्वायर्ड उसने थ्रू एन एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है, बट
I don't see the explanation to that. But keep this in mind कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, so we have to see whether it's a exothermic reaction or whether it's an endothermic reaction. What would occur, क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फिर से एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हम्म The reactants will form back into the products. If it's an exothermic reaction, by increasing the temperature, it would favors the reverse reaction. ठीक है? Yeah. If reaction is exothermic, increasing temperature would favor रिवर्स रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट्स वो रिएक्टेंट्स फॉर्म होंगे, मोर रिएक्टेंट्स वुड बी फॉर्म एंड वाइस वर्सा अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है. इफ एंडो, then increasing temperature would form more product. Okay, now let's see इसने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या डिस्कस की हुई है. Observe the color change from white to blue. Hydrous copper sulfate is in blue in color, and anhydrous is white in color. So when copper sulfate is heated, the water in it is removed, forming anhydrous copper sulfate, which is a white solid. This copper sulfate changes back to hydrated form on adding water. So this is a reverse reaction. Similarly, hydrous cobalt जो होता है वो पिंक इन कलर होता है, एंड जो एनहाइड्रस होता है वो ब्लू इन कलर होता है. सो दे बोथ आर, वैसे उन्होंने एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो नहीं डिस्कस किया हुआ, बट मतलब इन दे हैव नॉट डिस्कस दैट फॉर्मेशन दिस पॉइंट जो इसमें डिस्कस होना चाहिए था, बट उन्होंने जनरली डिस्कस किया है एक रिवर्सिबल रिएक्शन को. ओके, और इसका टेम्परेचर से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ इतना ही डिस्कस कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास जो है वो ब्लू सॉलिड जो है. आप इसमें ये देखो ना, खुद से ये देखो, वेन एवर आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो ही दोबारा वो पिंक कलर में जाएगा. सो टेम्परेचर तो नहीं यहाँ पे डिस्कस हो रहा, बेसिकली रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी मैं बार बार रिवर्स रिएक्शन को बोल रहा हूँ. डू वी अंडरस्टैंड द पॉइंट्स नाउ? Yeah. ओके. So the very first MCQ is which is true about the equilibrium state. So we have just studied. So उसमें उसने discuss किया हुआ है, both forward and reverse reaction continue at the same rate. Next उसने बोला हुआ है कि when a mixture of HI उसने Di2 लिखना था is sealed in a flask and temperature is kept constant, following reaction occur, which substance is present in equilibrium mixture? We know that at equilibrium both reactants and products are present. So we'll go for option number D, H2, I2, and HI. Concentration of reactant products at equilibrium remain unchanged if. So these all three options is the conditions for equilibrium. So we have to keep all of it. So all of the above are observed. Now, which of the following does not happen when a system is at equilibrium state? Does not उसने कहा है. So we know that कि reaction never stops. तो forward and reaction, reverse reaction जो है stop. This does not occur in a reversible reaction. Whereas irreversible reaction के अंदर equilibrium is never established. बाकी उसने definitions पूछी हुई है forward and reverse की. तो forward में reactant converts to product and reverse में product converts back to reactants. Chemical equilibrium हमारे पास क्या होता है? Definition is here. A state of reaction in which forward and reverse reaction takes place at the same time and concentration of product and reactant remains unchanged. फिर उसने बोला है टू केमिकल इक्वेशंस, तो एक इक्वेशन आप ये ही ले लो CuSO4.5H2O की, एंड एक केमिकल इक्वेशन आप ये SO2
और O2 की ले लें विद द कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन कंडीशंस। देन उसने हमसे पूछा हुआ है, तो इससे यहाँ पे पूछा हुआ है राइट टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो वो हम यही ऑप्शंस ले, ये ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज नॉट चेंज एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज नॉट चेंज। तो ये ऑप्शंस की ही थ्योरी हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन आई गेस गलत है, इसमें उसने पूछा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखें, बट उसने खुद से ही लिख के दे दिया हम लोगों को यहाँ पे। नेक्स्ट में उसने बोला हुआ है हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट कोबाल्ट क्लोराइड इक्विलिब्रियम। सो हमने पढ़ा हुआ है, इधर बुक में नहीं लिखा हुआ, पर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्स इन अ वे, जो हमने अभी स्टार्ट में बात की कि फिर से एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर it would favors the forward reaction, and if it's an exothermic reaction, so by increasing the temperature it would favors a backward reaction। तो हम वही थ्योरी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, उसने कहा है कि BrCl decomposes to give chlorine and bromine, हमें रिएक्शन लिखना, सो BrCl2 डबल एरोहेड्स Br2 plus Cl2 with their states, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।